So, since people are still joining, let's talk about yesterday's question. I think day before yesterday's question, where the question was, and now just go back and read the question. So the question was, which of the following measures give a idea of how much the data is spread out around the mean? Okay, and I said that the answer should be variance, but not mean absolute deviation, right? So I think some of you had question key. Why is that? Why is uh, although both of them measure the same thing, why is variance the right answer? Okay. So when we calculate the mean absolute deviation, अगर आपको formula पता होगा, मैंने बताया तो नहीं था. Let me just send the formula on the chat here for everyone. And have we can be looking at the same thing. So mean absolute deviation formula sample. Uh, Give me a second. I'm sending you the formula. So looking at an example. Someone's waiting here. Sorry, there's someone who's still waiting. Okay, I'll just send you the thing on the ask or answer. Okay. अगर आपके सामने डिस्कॉर्ड ओपन रहेगा तो वहां पर एक एग्जांपल दिया है हाउ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज कैलकुलेटेड. Maybe into the same thing. So mean absolute deviation में क्या करते हैं हम लोग? We calculate the mean first. All right, that is what is present in the yellow or orange color in the middle. तो mean निकाला पहले, which is 3.3. उसके बाद में जो आपके नंबर्स हैं उसमें से मीन को सबट्रैक्ट करना है. अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव करना है. ओके, यू वांट टू हैव एन एब्सोल्यूट वैल्यू और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का एवरेज निकालना है एंड दैट विल गिव यू मीन एब्सोल्यूट डिविएशन. वेरिएंस में क्या करते हैं हम लोग मीन माइनस द वैल्यू का स्क्वायर करते हैं. करेक्ट, द स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट हियर. नाउ लेट्स से आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, some data points which are very far away from each other. स्प्रेड कैलकुलेट करना मतलब क्या करना कि हमारा डेटा कितना ज्यादा दूर है एक दूसरे के. दैट इज व्हाट we want to capture. Now if there are outliers, if the data is really spread out, then variance के अंदर जो squaring हो रहा है, that squaring amplifies the measure of spread. Okay, so the variance really amplifies the measure of spread because of the squaring present in that, whereas mean absolute deviation will not amplify it enough. So that's why usually जब आपको spread के बारे में पता करना होता है तो measure is a better, sorry, variance is a better measure than mean absolute deviation.
You can also use mean absolute deviation, but if you were asked what is a better thing to use, it would always be variance. Mean absolute deviations is sometimes, in fact, most of the times used for finding out the मॉडल इवैल्यूएशन and all of that कि ये मॉडल किस तरह से प्रेडिक्ट कर रहा है या फिर किस तरह से टेस्ट पे या फिर ट्रेनिंग पे प्रेडिक्ट कर रहा है, इज इट गुड और बैड मॉडल. You can decide some things using the mean absolute deviation, but the right answer for that would be variance. Okay. All right, so let's start today's session. Questions on that? एग्जाम्पल सेंड किया मैंने, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. ये रफ है, मतलब although it's written in such a language that it won't be easy to understand. तो बहुत इजी है. यहाँ पे सिर्फ नंबर्स दिए ऊपर, सेंटर में उन्होंने मीन कैलकुलेट किया, फिर हर एक नंबर से मीन को माइनस किया और उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिया उसका एवरेज लिया उन्होंने. तो दैट इज हाउ द मीन एब्सोल्यूट डिविएशन इज कैलकुलेटेड. राइट. एंड वेरिएंस इज used more often because it tells you about the dispersion better than the mean absolute deviation. That's why variance is a bit more commonly used measure for calculating the dispersion या फिर spread of the data. All right, so with that, let's get started with today's session. So today is the first session for Python, and Python is the programming language that we are going to learn in this particular course. Apart from Python, हम लोग SQL भी पढ़ने वाले हैं और दोनों में आपको if not equal, बट जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. पाइथन पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि पाइथन इज द गो टू लैंग्वेज या फिर डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, मोस्ट ऑफ द एआई इंजीनियर्स, मोस्ट ऑफ द डेटा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी. ठीक है, तो हम लोग पाइथन पे अच्छे से फोकस करेंगे. विल स्टडी इट इन एंड आउट. हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे. विल प्रैक्टिस पाइथन इतना कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के भी इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो. ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा. ना, सेंड द प्रैक्टिस. So let's start with the most basic question, that why is it really necessary to learn programming? Okay. So there are top 6 reasons which are listed here. Uh, Attractive salaries, it gives you opportunity to work from home, you will have flexible hours, you have options to choose between the job offers. Many students have got multiple job offers and they can choose basically कि कौन सा job उन्हें करना है. And finally, the last one, which is my most favorite one, which is to express your creativity. By writing a program or by writing code, you're creating something new. Okay? And that creation of something new is what uh, everyone's brain is is craving for. Right? If अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, अगर वो टास्क पहले से करके रखा है और आपको सिर्फ उसको मे बी थोड़े से चेंजेस करने इधर उधर, तो यू विल नॉट बी फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. बट इफ यू आर गिवन अ टास्क जहाँ पे आपको खुद से सोचना है, खुद से डिसाइड करना है और खुद से क्रिएट करना है कुछ, यू विल फील मोर एक्साइटेड अबाउट दैट. दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई I feel that everyone should learn programming, including the kids, because that gives you an opportunity to create something from nothing. Right? You just have list of instructions how to use certain language, but you can mix all of those things together to create something new, create something novel. Do you can you think of any examples that are not listed here, or any one of the examples that, or the reasons that you may have started learning Python or thinking of learning Python? Anything apart from the ones that are listed here? आप में से कितने लोगों को प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर हुआ है पहले? आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपर्ट्स हो या फिर किया है प्रोग्रामिंग. एक्सपोजर एज इन कभी तो भी कोड देखा है या फिर कोड को हाथ लगाया है या फिर लिखने की कोशिश की है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल?
So I have done Java. So Abhishek has done Java. Good. So Vasudev, Sumit. Okay. All right. Fair enough. And don't worry about the people who have not seen or not been exposed to Python or not been exposed to any of the program languages. We'll start such a way that आपको पूरा बेसिक से ही सिखाया जाएगा. First few weeks will be easy for people who already know Python or who are already exposed to Java programming languages. Vasudev, you have a question? All right. These are some salary statistics for people who have Python as a skill on their resume. This basically tells you कि आपका experience कितना है on x-axis और y-axis पे how much salary is expected. And these are rough number. As you can see, the source for here is payscale.com. These are not made up numbers. These are numbers from people who have submitted their salaries to payscale.com website, or they already these websites also do their own research. They also do their own surveys to come up with these numbers. Okay, so it's a valuable skill to have on your resume. Most of the times what happens is जब लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, they start having their own teams या फिर they move in the technical direction. Usually जब आप senior हो जाते हैं तो you have a option. Do you want to go into uh, management or do you want to keep on the track of technical, right? So people who keep in the track of technical, we are talking about them here. Okay. This is about the data scientist. Okay. Right. So the graph looks steeper for data scientists because it's a more demanding job. It's a more interesting job, and it's also more um, it's something more than just Python. It has more skills attached to it. That's why people tend to get paid more for data scientists. Excuse me. ओके, सो कोर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पाइथन के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक विच इज थिंक पाइथन. आपको ये रेफर करना है और जब भी कोई चैप्टर पढ़ना होगा आई टेल यू विच चैप्टर टू रीड फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक. But what I have done in the last few sessions or last few batches is I have referred the official website of Python more than this particular book. So जब भी हमें पढ़ना होगा आई टेल यू कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है. और आपको रैंडमली इंटरनेट पे जाके कुछ भी पढ़ना नहीं है. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन लर्न इट. ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज्ड. सर ये पढ़ लिया, वहां पे अलग बोल रहे थे, यहाँ पे अलग बोल रहे हैं, आप अलग बता रहे हैं. शुरुआत में जब तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते तब तक आई सजेस्ट कि आप एक किताब को ही स्टिक करके रहें और द जर्नी विल बी इजियर. हम लोग पाइथन ब्राउजर में ही करने वाले हैं. हम लोग ब्राउजर का इंटरेक्टिव मोड यूज करेंगे जहां पे हम लोग को पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे लैपटॉप्स पे या फिर हमारे कंप्यूटर्स पे. विल बी यूजिंग अ वेबसाइट कॉल्ड एज kaggle.com to do all the assignments, to do all the Python work शुरुआत के कुछ दिनों में. ओके, शुरुआत के कुछ दिनों में. आफ्टरवर्ड्स थोड़े दिनों के बाद में जब हमारे पास में पाइथन के स्किल्स आ जाएंगे आप लोगों के पास, at that time we'll start on installing Python in your computers. There is a reason behind that, because most of the times what happens is students or people who are trying to learn a particular language, especially a technical skill, they get burned out by the process of installing things or by the process of using that software itself. So in order to avoid all that burnout or all that कंफ्यूजन, फिर आपके पास मल्टीपल अलग अलग डिवाइस होंगे, किसी के डिवाइस पे इंस्टॉल नहीं होगा, वो बहुत सारे झमेले हैं. विल विल नॉट इवन ट्राई टू एड्रेस दैट पार्ट. हम लोग वहां पे जाएंगे ही नहीं. वी विल यूज कैगल.
Kaggle backend में उनके खुद के क्लाउड सर्विसेज यूज करता है and we'll use that particular website शुरुआत के कुछ दिनों में. After that we'll try to install it on your computers. Okay. डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे हमारे. पाइथन के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं या फिर पाइथन और डेटा साइंस के दोनों के एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं. अगर आपको पाइथन आईडीई में करना है, आपके कंप्यूटर पे ही करना है, तो द चॉइस ऑफ आईडीई इज पाइचार्म. आईडीई अगर आपको पता नहीं होगा तो इट्स कॉल्ड एज इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इट्स अ सॉफ्टवेयर which you have to install on your computer in order to help you, assist you in doing a development. Okay? तो वो पाइचार्म नाम का सॉफ्टवेयर है या फिर पाइचार्म नाम का आईडी है जो आपको यूज करना है. राइट. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट आईडी? कभी यूज किया है आप लोगों ने आईडी? No, Yes. sir. ओके. पाइचार्म यूज किया है किसी ने? No. ऑलराइट, दैट्स फाइन. No. ठीक है. आईडीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि उनका काम इतना होता है कि दे प्रोवाइड यू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में इजी हो जाए आपको. इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपलसरी. वी कैन डू इट विदाउट द आईडी टू. बट जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तब हम लोग पाइचार्म यूज करने वाले हैं. So now I'll show you a demo of this Kaggle.com quickly. Just stop sharing my screen. Sorry, stop sharing the tab and start sharing the screen. इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको अकाउंट ओपन करना है. सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे. Yes, Vasu. Like Python, how the Python has been invented and why the Python name has been given to this software. Like, can you tell me about this little much brief information? We'll learn about that. Okay? It's all coming up. Don't worry. We'll learn about programming languages. We'll learn about Python, pros and cons. We'll learn about that. Okay. Okay. The reason that the Python was developed is there were some low-level language earlier, such as assembly level language या फिर machine level language, जहाँ पे कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था छोटा सा टास्क करने के लिए भी. और there were some application developers जिनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो इतना लो लेवल का कोड लिख सके, क्योंकि बड़े सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यू कैन नॉट राइट सो मच ऑफ लो लेवल कोड एंड देन एक्सपेक्ट इट टू रन. बहुत सारे बग्स होते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, and it was not easy for everyone to do that. तो Python is a general purpose language जो उन्होंने बनाई है, which is again a wrapper. रैपर का मतलब होता है इंटरनली तो वहां पे मशीन लेवल प्रोग्राम क्रिएट होता ही है, सी के कुछ कॉल होते ही है, बट एक बाहर एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल या फिर एक लाइब्रेरी उन्होंने लिखी जो ये सारे टास्क जो कॉमन होते हैं वो इजी कर सके, जैसे कि फाइल ऑपरेशंस, फिर उसके बाद में डेटाबेस एक्सेस, फिर उसके बाद में मेमोरी एलोकेशन. ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के. तो ये इजी करने के लिए उन्होंने पाइथन लैंग्वेज इन्वेंट की. पाइथन के जैसी जावा है जो फॉर सेम रीजंस वाज इन्वेंटेड. जावा वाज मेनली इन्वेंटेड टू राइट एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस फॉर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Python also can do the same job, which is it can help you write an enterprise level solutions these days. जी. The main reason is always that कि लो लो लैंग्वेजेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है लिखने के लिए, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मेमोरी लीकेज. जब सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो जितना कम कोड रहेगा मैनेज करने के लिए उतना अच्छा होता है. लेकिन अगर आपका कोड बढ़ते जाता है, ऑब्वियसली जब सॉफ्टवेयर बढ़ता है तो
कोड भी बढ़ता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी बढ़ते जाता है, और वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप पूरा लो लो लैंग्वेज में लिखते हो, तो यू नीड समथिंग विच इज मोर एब्स्ट्रैक्ट. So that's why I'm guessing that the Python was invented. And I think the name comes from one of the sitcoms, which is don't remember the name of the sitcom, but the creator of Python language was a big fan of that particular sitcom, and that's why he said, "I'll just name it as a Python." I'm not sure about the story, but that's what I've heard. Okay, we'll learn about that. Yes. Don't worry. हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. जी जी। अभी के लिए आप लोग क्या करो, मैंने ये लिंक सेंड की है, ये लिंक ओपन करो. ठीक है, जस्ट शो इट टू ऑल. प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ मैं. कॉपी करो लिंक को. ओपन द लिंक हियर लाइक दिस. अगर कोई कंप्यूटर पे ज्वाइन किया है तो दे कैन डू इट राइट नाउ टू. गो टू रजिस्टर. अगर अकाउंट नहीं हो तो रजिस्टर करना है. रजिस्टर विद गूगल. यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आपका पासवर्ड. नेक्स्ट. मुझे रजिस्टर करने नहीं देगा क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट तैयार है, तो it already lands me into this page where my account is present. Okay, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर जाइए. ऑलराइट, सो दिस इज kaggle.com. kaggle.com पे यूजुअली आपको डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे बहुत सारे. kaggle.com पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं बहुत सारे. जैसे कि अभी कुछ कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं. Paid competitions, some are free competitions, some are just to earn some swag and so on. अभी एग्जांपल दिखा सिंपल हम लोग. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज वाओ. उनका स्पीच रिकॉग्निशन who will win this competition gets $53,000. Okay? आपको अभी जाके किसी कंपटीशन में do first, उसके बाद में time permits will try to enter one of the competitions. Okay, कुछ some pro competition for language, some are for sorry knowledge, some are for just earning swag and so on. आपको क्या करना है, Kaggle पे अकाउंट करने के बाद में क्रिएट, you have to click on this create button. Yeah, let me just show it to you again. ठीक है, ऐसे कुछ क्लोज रहेगा वो पहले. You have to click on this three buttons here, three horizontal lines. यहाँ पे create पे क्लिक करना है. You have to create a notebook. Okay? रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, आपको बाद में ट्राई करके देखना ही है. जैसे हम लोग कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, या फिर कोई एक्सेल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, या फिर कोई प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से ये एक डॉक्यूमेंट है, ऐसे समझ लो आप. ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है, आपको इसको नाम देना पड़ेगा कुछ. लेट्स जस्ट गिव इट हेलो वर्ल्ड. आई गिव इट अ नेम. यहाँ पे जो लिखा है इसको डिलीट कर देता हूँ मैं अभी. ठीक है, कैगल नोटबुक होता है, उसमें आपको दो चीजें दिखेंगी. एक तो कोड प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो मार्कडाउन प्रेजेंट रहेगा. मार्कडाउन का मतलब क्या है वो बता देता हूं मैं आपको. मार्कडाउन का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन,
जैसे कि अगर मुझे कोई फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि दिस इज अ नोट, पुट द कोड। यहाँ पे कोड नहीं है प्रेजेंट, दिस इज जस्ट एनी नॉर्मल सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। इसमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको अगर बोल्ड करना है इसको, तो इसको सिलेक्ट करो, इसको बोल्ड करो, यू कैन मेक इट इटैलिक, यू कैन मेक इट कोटेड, you can have a link inserted, you can add an image, you can add bullet points, you can have an header। ये सब कुछ पॉसिबल है। जो भी आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस रहते हैं, वो सारे ऑप्शंस प्रेजेंट रहेंगे आपको मार्कडाउन में। ओके, तो दिस इज अ मार्कडाउन सेल, दिस इज अ कोड सेल। दो टाइप के सेल्स होते हैं, दिस इज अ कोड सेल, दिस इज अ मार्कडाउन सेल। अगर आपको कोई भी सेल डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी सेल ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। प्लस कोड का मतलब होता है कोड का सेल ऐड होगा नीचे, प्लस मार्कडाउन का मतलब होता है नीचे मार्कडाउन का सेल ऐड होगा, ठीक है। तो डिलीट सम ऑफ दिस नाउ। अभी ये जो कोड वाला सेल है, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो, पाइथन का कोड लिख सकते हो आप, ठीक है। तो पाइथन का सबसे पहला कोड जो आप लिखोगे, इट विल बी टू प्रिंट समथिंग, ठीक है। आपको कुछ प्रिंट करना है, एंड यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आई जस्ट शो यू एग्जांपल, आपको करके देखना है बाद में घर पे। प्रिंट लिखना है, ओपन राउंड ब्रैकेट, डबल कोट्स, यहाँ पे आपको एक मैसेज भेजना है, दिस इज हाउ यू सेंड अ मैसेज इन पाइथन। फिर प्रिंट अ मैसेज इन पाइथन और उसको क्लोज करना है, यू प्रेस एंटर। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है, इसका आउटपुट ये है। अगर आपको मल्टीपल लाइंस चाहिए, एक एंटर लगाना है यहाँ पे, एंड यू हैव टू राइट प्रिंट अगेन हियर, प्रिंट हेलो अगेन। तो दो लाइन में आएगा ये। तो ये आपका पहले लाइन का एग्जीक्यूशन है, ये सेकंड लाइन का एग्जीक्यूशन है। ओके, तो जो पाइथन नोटबुक है, उसमें दो टाइप के सेल्स होंगे। एक रहेगा आपका कोड सेल और एक रहेगा मार्कडाउन सेल। मार्कडाउन सेल में आपको टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है सारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये डिलीट करता हूँ मैं, जस्ट क्रिएट ऐड वन हियर। ऊपर मैंने एक मार्कडाउन ऐड किया, मुझे टाइटल देना है इसको, ठीक है। तो टाइटल क्या दूंगा मैं, दिस इज माय फर्स्ट बुक, आई लव। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने सिर्फ डाल दी। ये टेक्स्ट की तरह दिखेगा, राइट। जैसे हम लोग कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, उसको साइज दे सकते हैं, उसी तरह से ये टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन ये इस सेल में रहेगी। इस तरह से आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि यू यू कैन हैव अ नोटबुक विच हैज कोड एंड विच आल्सो हैज अ मार्कडाउन। अब ये फैसिलिटी क्यों दी गई है, ताकि आप रिपोर्ट जनरेट कर सको या फिर एक रिपोर्ट बना सको। एक एग्जांपल देखते हैं रिपोर्ट का, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं हम लोग ये मेरे सारे नोटबुक्स हैं। आई विल पिक वन ऑफ द नोटबुक्स फ्रॉम हियर। Give me a second. I think someone's waiting in the room. I think there should be something. So आपको कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाना होता है, जहाँ पे आपका टेक्स्ट रहेगा विच इज द मार्कडाउन, फिर थोड़ा सा कोड रहेगा, फिर कुछ टेक्स्ट रहेगा, फिर कोड रहेगा, फिर कोड रहेगा, एक कोड का आउटपुट रहेगा थोड़ा सा, फिर से टेक्स्ट आएगा, फिर कुछ प्लॉट्स रहेंगे उसमें, फिर से कुछ कोड रहेगा, कोड के आउटपुट रहेंगे, कुछ प्लॉट्स रहेंगे फिर। सो ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट अ रिपोर्ट, या फिर इसको नोटबुक बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पाइथन नोटबुक और दिस इज अ जुपिटर नोटबुक टू बी प्रिसाइज।
नोटबुक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? यू हैव some text and you have some code. Now coming back to your hello world example, ये नोटबुक आपने क्रिएट कर दी, इसको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में सेव करते रहना है कंट्रोल एस से। कोड एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे रन का बटन है, रन करंट सेल। आपको कोड के पास जाना है और वहां पे रन का बटन प्रेस करना है, दैट विल एग्जीक्यूट द कोड। इफ यू वांट टू एडिट द कोड, जस्ट क्लिक ऑन दैट सेल एंड यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन हियर। To edit this note markdown, you have to double click there. See, once you're done editing, you can press run here. These are some basic instructions for Jupyter Notebook. Once all of this is done, you have to go here to save version. यहाँ पे कुछ change नहीं करना है आपको, and just say save. Something will open on this side. It will run. It will save the output. ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब और ज्यादा कोड लिखेंगे तब। अभी के लिए आपको टास्क इतना है कि यू हैव टू क्रिएट दिस। ओके, इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने, यहीं पे प्रेजेंट, जस्ट मिनिमाइज दिस। ओके, सेव हो गया, सब कुछ इज डन। नाउ यू कैन क्लोज दिस नोटबुक फ्रॉम हियर। जैसे लीव, डन। नाउ आई कैन गो बैक टू सी कि वो कहाँ गया, राइट? अगर मुझे देखना है कि वो कहाँ गया, तो kaggle.com में आई जस्ट शो इट टू यू क्विकली। तो kaggle.com है आपका, दिस इज वेयर योर लिखे रहेंगे। अगर आपने पहला नोटबुक क्रिएट किया तो वहां पे 1 लिख के आएगा, तो यू टू क्लिक देयर, यहाँ पे नोटबुक रहेगा वो आपका, टू क्लिक दैट नोट, और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यू विल हैव सम नोट्स, यू विल हैव सम कोड। अगर आपको कुछ चेंज करना है इसमें, तो यहाँ पे एडिट का बटन रहता है, थोड़ा सा तो यहाँ पे ऊपर एडिट का बटन होता है, जस्ट क्लिक ऑन एडिट, तो वो कोड एडिट करने के लिए ऊपर हो जाएगा। फिर आपको अगर शेयर करना है इसको विद पब्लिक, हैव टू क्लिक हियर शेयर, इसको पब्लिक करना है, एंड दिस विल बी अ लिंक दैट कैन बी यूज्ड। इसको कॉपी करना है और इसको सेव करना है, दिस विल मेक योर कोड पब्लिक। नाउ इफ आई सेंड दिस टू यू ऑन द चैट हियर, आप में से कोई भी इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग फास्ट इंटेंशनली, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला आपको, और यू आपको अगर आपको बाद में ट्राई करके देखना ही है। ठीक है, अभी अगर आपके पास होगा लिंक, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, यू विल सी व्हाट हैपेंस। आपको दिखना चाहिए समथिंग लाइक दिस, दिस इज व्हाट यू विल सी। दिस इज माय फर्स्ट नोटबुक, आई लव पाइथन, और ये आपको प्रिंट किया हुआ दिखेगा आपको व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक। All of that happened because I shared it as a public. I can also have private notebooks. ठीक है, तो आपके जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, आपके जितने भी अगर कोई डेली क्वेश्चंस होगा या फिर जितने भी कोड रहेगा, हम लोग इस तरह से शेयर करेंगे। रीजन बीइंग, अगर कुछ मिस्टेक होता है आपसे, मुझे डिबग करने के लिए आपके कंप्यूटर के एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आप सिर्फ लिंक दे दोगे, मैं ये लिंक ओपन करूंगा, और अगर मुझे करेक्शंस करने हैं या फिर कुछ चेंजेस बताने हैं, तो बहुत जल्दी से हो जाता है ये। ओके, let me just pause here because there is lot of information and I want you all to absorb it. अगर कोई नोट्स ले रहा है तो नोट्स ले लो, लिख के निकालना है तो लिख के निकाल लो, क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस पूछो। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो कुछ चीजों के कुछ लोगों के लिए, बट ट्रस्ट मी, दिस इज मच मच बेटर देन इंस्टॉलिंग थिंग्स एंड देन गेटिंग स्टार्टेड, क्योंकि इंस्टॉलेशन में एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता निकल जाता है। उतना टाइम अगर इंस्टॉलेशन में ही चला जाता तो हम लोग पढ़ेंगे कब, हम लोग सीखेंगे कब?
ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज मच इजियर, दिस इज मच बेटर. यस, क्वेश्चन. लिंक यहाँ पे सेंड कर दी है मैंने, और ये जो अभी की लिंक है वो यहाँ पे सेंड कर दी मैंने. सबको ट्राई करके देखना है. अगर अभी पॉसिबल है तो अभी कर सकते हो, नहीं तो सेशन के बाद में मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा. यस, क्वेश्चन. कैगल का रजिस्ट्रेशन का फिर से बताऊं? ओके, ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट लॉग आउट फ्रॉम हियर. ठीक है, अगेन कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है. डोंट पे फॉर एनीथिंग. दिस इज अ फ्री सर्विस फ्रॉम कैगल वेबसाइट. कैगल is owned by Google. Okay. All right. So ये लिंक है kaggle.com. इसको कॉपी करना है, आपके ब्राउजर में पेस्ट करना है और ओपन करना है. अगर आपको फोन से करना है तो आप फोन से भी कर सकते हो. यू डोंट नीड अ कंप्यूटर फॉर दिस. दैट्स इवन दैट्स अनदर ग्रेट थिंग अबाउट कैगल, कि आपको अगर मैं कुछ बताऊं चेंज करने के लिए, या फिर अगर आपको मैं बोलूं कि यू हैव टू शेयर दिस, यू डोंट हैव टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर. यू कैन नॉट टेल मी सर मेरे पास कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है तो मैं कर नहीं पाऊंगा या फिर कर नहीं पाऊंगी. आई नो कि एक मोबाइल से भी होता है, मोबाइल में भी ब्राउजर होते हैं. सो वो सारे काम आपके या फिर जो भी इश्यूज रहेंगे विल विल नॉट हैव टू डील विद एनी ऑफ दैट. सो kaggle.com पे जाओ, रजिस्टर पे क्लिक करो. रजिस्टर विद गूगल करना है यहाँ पे. और ये लॉग इन कर देगा मुझे क्योंकि मेरा पहले से लॉग इन है. लॉग आउट करता हूँ मैं. लेट्स ट्राई दिस अगेन. लॉग आउट करता हूँ मैं, रजिस्टर करता हूँ. यू शुड आस्क मी माय यूजर नेम पासवर्ड, बट वो पूछ नहीं रहा है क्योंकि इट्स ऑलरेडी सेव्ड आई थिंक. ठीक है, इट्स ऑलरेडी सेव्ड, लेकिन वो रजिस्टर विद गूगल करना है आपको. आपको यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, एंड इट विल ब्रिंग यू टू दिस पर्टिकुलर पेज. दिस इज योर होम पेज फॉर kaggle.com. यहाँ पे आपके डेटा सेट दिखते हैं. अगर आपका कोई डेटा होगा जो आप अपलोड करते हो, यहाँ पे नोटबुक्स आते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया. यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स आते हैं जिसमें आप एनरोल्ड हो. यहाँ पे डिस्कशंस आते हैं, जैसे कि अगर किसी ने आपने कभी कमेंट किया या फिर किसी को कोई कमेंट पे आंसर दिया, वो सब यहाँ आता है. एंड फाइनली अगर कोई कोर्स आप कर रहे हो कैगल पे, वो कोर्स की लिस्ट यहाँ पे आती है. ठीक है, फॉर नाउ हमारा फोकस रहेगा नोटबुक के ऊपर सिर्फ. ये बाकी की चीजें यू कैन इग्नोर फॉर नाउ. विल ओनली बी फोकस्ड ऑन नोटबुक्स. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे ये तीन वाले बटन पे क्लिक करना है. इट विल शो यू मोर ऑप्शंस हियर, अबाउट माय वर्क, अबाउट योर वर्क हियर, डिस्कशन, कंपटीशन. सेम ऑप्शंस यहाँ पर भी है. आपको क्रिएट पे जाना है, न्यू नोटबुक बोलना है. ठीक है, न्यू नोटबुक, नॉट डेटा सेट और एनीथिंग, न्यू नोटबुक. और वहां से यू हैव टू क्रिएट द नोटबुक. वहां से आगे का पहले ही दिखाया था मैंने. हेलो सर. यस. सर ये मैंने पहले प्रिंट वाला जो किया था, उसके बाद अब मुझे हम्म. ऊपर जो लिखा है अपने कमेंट, जैसे कि दिस इज माय हम्म. फर्स्ट नोटबुक, उसको कैसे हम्म. एग्जीक्यूट करें? उसको भी सेम वैसे ही. अभी आई जस्ट शो इट यू. तो आई जस्ट एडिट हियर. और ये है. ये लिख पाए क्या आप? मैंने सर प्रिंट वाला लिख दिया, अब ऊपर वाला मेरे को लिखना है. ओके, ऊपर वाला दिस इज लिखना माय है तो डू फर्स्ट वन नोट. थिंग. ऐड सेल हाँ करो सर. यहाँ पे. नीचे सेल हो जाएगा ओके. ऐड, सॉरी, इसको डिलीट कर दो. ये मार्कडाउन ऐड करो. ठीक है, उसके बाद में इसको यस सर. ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप करना है. ठीक है, ऊपर नहीं ऐड कर ओके. सकते ऐसे डायरेक्ट से. ठीक है, ड्रैग ड्रैग ऊपर होगा. नीचे कर अच्छा. सकते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं. या फिर ओके देर इज अ ओके. शॉर्टकट, देर इज अ शॉर्टकट. शॉर्टकट इज यस. एस्केप एंड ए फॉर एडिंग अ सेल ऑन द टॉप. Escape and व्हाट B सर? for adding escape button. ESC, escape button.
ओके हाँ, एस्केप, उसके बाद में ए ऊपर ऐड करेगा वो सेल, लेकिन वो कोड सेल ऐड करता है। एस्केप और बी विल ऐड अ सेल इन बिलो। ओके सर। Yeah. एस्केप। Play with it for some time. You'll get quickly hang of it because it's a easy website to navigate through. ठीक है, डोंट वरी, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, बट ट्राई टू प्ले विद इट, ट्राई टू सी अदर डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पे कुछ रन के ऑप्शंस है, कुछ एड ऑन के ऑप्शंस है। यू कैन कनेक्ट दिस टू योर गूगल क्लाउड अकाउंट, या फिर यू कैन कनेक्ट दिस टू योर आई थिंक गूगल SDK अकाउंट एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, it has pretty good features. यहाँ पे आप खुद का डेटा लेके आ सकते हो, खुद के मॉडल लेके आ सकते हो। अगर आपका कोड स्केड्यूल या फिर रन करने के लिए टाइम लगता है तो ऑल ऑफ दैट इज प्रेजेंट हियर। अगर आपको GPU की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट करते हो जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह लगने वाले हैं, तो यहाँ पे वो लोग GPU भी प्रोवाइड करते हैं। think you can run it with a GPU. आपके पास GPU नहीं होगा, आपके पास TPU भी नहीं होगा। TPU is a tensor processing unit. These are some infrastructures which are not easily available on computers or laptops, so they provide it for free, and um, it's a good service basically. Okay? गूगल का खुद का एक और भी है, गूगल कोलैब नाम का, बट आई लाइक कैगल मोर बिकॉज been using this for long long time. कैगल के और भी अल्टरनेटिव्स है मार्केट में, but we'll stick to this one, Kaggle. Okay. Okay. So रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, आप सबको ट्राई करके देखना है, और जैसे ही आपका नोटबुक तैयार हो जाए यहाँ पे सेंड करना है वो। ठीक है, आई चेक एवरीवन्स नोटबुक, मेक श्योर आप उसको पब्लिक कर रहे हो। और आपको अगर चेक करना है कि आपका नोटबुक काम करता है कि नहीं, you have to copy the link of your notebook, go to your browser, open a private window, और वो प्राइवेट विंडो में कॉपी पेस्ट करके देखना है। वो ओपन होना चाहिए प्राइवेट विंडो में, तभी समझ लेना कि वो काम कर रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फॉरगेट टू मेक इट पब्लिक, बट यूल मेक दोस मिस्टेक्स इनिशियली। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट कि आप नहीं कर रहे हो पब्लिक कभी कभी। ठीक है, इट्स एक्सपेक्टेड कि यू विल फॉरगेट समटाइम्स टू मेक इट पब्लिक एंड ऑल। Alright, so that was about kaggle.com, and I'll be sharing the link with you all. ठीक है, सबको लिंक, सॉरी, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं, और आपको रिकॉर्डिंग फॉलो करके जो भी स्टेप्स फॉलो किए मैंने वो फॉलो करके आपको लिंक सेंड करनी है मुझे बस। Alright, so let's carry on now. और कोई भी क्वेश्चंस होगा एक्सप्लोर करो कैगल को, और कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन आस्क मी द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। नेचुरल लैंग्वेज मतलब आपकी हिंदी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, ये सारे नेचुरल लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब पाइथन, जावा, सी शार्प, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों लिखते हैं? ताकि हम कंप्यूटर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सके, कंप्यूटर को कुछ बता सके कुछ करने के लिए। वी कैन सेंड इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर्स। नेचुरल लैंग्वेज क्या है? इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अमॉन्ग्स द ह्यूमंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ग्रामर होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। मतलब अगर आपने सेमीकोलन देना भूल गए, या फिर कोई राउंड ब्रैकेट देना भूल गए, या फिर डबल कोट्स देना भूल गए, तो वो एरर देता है आपको, क्योंकि उसका जो ग्रामर होता है वो स्ट्रिक्ट होता है। नेचुरल लैंग्वेज का वैसा नहीं है। अगर मैंने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर दी while speaking to you or while sending a message to you, even if I make a grammatical mistake, it's fine, the message will still be received, or you will be able to understand ki what I'm trying to say. But if you make a grammatical mistake while writing a program, computer is not going to understand कि करना क्या है. It will just give you a compile error.
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने कोई कोड लिखा या फिर आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी, that instruction is going to have only one and only one meaning. There is no ambiguity. Whereas in natural language, if I say a word, the meaning of the word changes by the context in which it's being used, or by the context in which it is getting written. Correct? So it's having some ambiguity in it, and it's open to interpretation. Some people might interpret it something else, whereas others will interpret it something else. वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता. Anything that you write will have only one and only one meaning. So there is no ambiguity in that. Right? So these are key differences between programming languages and your natural language. All right. So I keep on using the word program, programming language, code, instruction. So what exactly is a program? And how can we find a comparable example? Okay. So program is nothing but a set of instructions. Think of it like a recipe to maybe make a tea, जहाँ पे आपको instructions दिए रहेंगे. ठीक है. And those instructions will be like, okay, first you boil the water, then put tea powder. The sequence might change, the output will most of the times be same. Okay. I mean, when I say sequence might change, you have to be also logical about it. ऐसे नहीं कि पहले ठंडा चाय आप ये कर दोगे, उसके बाद में I mean, obviously there will be a sequence in the way you're doing the recipe, but internally some things can be interchanged. Same thing with the program. इंस्ट्रक्शंस तो आप देते हो, इंस्ट्रक्शंस वो कुछ एक सीक्वेंस में देते हो, पहले ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में वो करना है. सो ऑल ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस टुगेदर इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम. सो आपकी जो रेसिपी होती है वो भी एक प्रोग्राम ही है. ओनली थिंग दैट दोज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन, and the instruction that you give in form of a programming language are executed by a computer. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 5 चीजें होती है जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिस्टेड है. जैसे सबसे पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, मैथ, कंडीशनल एग्जीक्यूशन और रिपीटेशन. इनपुट का मतलब होता है आपको कुछ टाइप करना है या फिर आपको उस प्रोग्राम को कुछ इनपुट देना है. Okay? अगर हमने रेसिपी का एग्जांपल दिया, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स इज नथिंग बट द इनपुट टू द रेसिपी प्रोग्राम, उसी तरह से अगर कोई प्रोग्राम होगा जो यूजर की इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो यूजर का नाम और यूजर का एज, यूजर का डेट ऑफ बर्थ, ऑल ऑफ दैट इज इनपुट टू द कंप्यूटर या फिर इनपुट टू द सॉफ्टवेयर, इनपुट टू द प्रोग्राम. उसके बाद में उसके साथ में क्या करना है वो आपको पता नहीं अभी तक, वो प्रोग्राम डिसाइड करेगा, या फिर जिसने प्रोग्राम लिखा है that person will decide what he wants to do with that input. Okay? And if you're giving an input, definitely you're also expecting some output. Okay? You're doing some actions, there will be a result of that action, which is in the case of the recipe is the tea that you get, final tea that you get. Okay? In case of computers, you will see something on the screen, such as अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इस पर्टिकुलर कोड को, कहाँ गया वो? Yeah. Right, so when I executed this program, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, इसका आउटपुट ये आया. So this is the output, this is the input, this is the input again, this is the output. Okay, so that is what I'm talking about here. Third part is a math. मैथ में आपको जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो आजकल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारे ही सपोर्ट करते हैं.
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, साइंटिफिक मैथ, सारे सपोर्ट करते हैं वो। ठीक है, अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो वो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कंडीशनल एग्जीक्यूशन। जैसे आप रेसिपी में बोलते हैं कि जब चाय उबलना शुरू हो जाए तब आप गैस बंद कर सकते हो, राइट? व्हेन आई से इफ द टी इज बॉइलिंग यू कैन टर्न ऑफ द गैस, वो इफ कंडीशन जो है इट्स अ या फिर दैट इफ स्टेटमेंट दैट आई मेड इट्स अ कंडीशन। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप कंडीशंस दे सकते हो। कंडीशन क्या रहेगा? इफ द एज ऑफ अ पर्सन इज less than 15, then don't allow him to create the account. If the age of the person is more than 15, then let him create the account. Right? So these are examples of conditional execution. आपका प्रोग्राम ऐसे बहुत सारे कंडीशंस रहेंगे उसमें। ठीक है, when you write a program, when you write a software, you'll see many places where there are conditional executions. Okay? And finally, repetition. Repetition का मतलब होता है something that you do repeatedly. जैसे कि stirring your tea while making it, correct? या फिर मेकिंग मल्टीपल कप्स या फिर फिलिंग मल्टीपल कप्स ऑफ टी। यू आर डूइंग द सेम टास्क एंड यू आर रिपीटिंग इट। सिमिलरली कंप्यूटर्स भी सेम टास्क करते हैं, रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यूजर कम्स इन, we he inputs his name, he inputs his age, that software or that computer decides whether the account should be created or not. Next time another person comes in, he'll repeat the same thing. ऐसे नहीं कि नया पर्सन आ रहा है तो एक बार फिर से नया कोड लिखना पड़ेगा मुझे और फिर से उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वैसे नहीं होता। सेम कोड कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, सो दैट इज व्हाट दिस रिपीटेशन बेसिकली मीन। और ये फॉर्मली दिस इज व्हाट इन कंप्यूटर साइंस इट्स taught। ठीक है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हैविंग दीज थ्री स्ट्रक्चर्स। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन। कंप्यूटर साइंस का अगर आपका बैकग्राउंड होगा तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कोई भी उठा लो, उसमें ये तीन स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ओके, इट कुड बी एनी लैंग्वेज, एनी एआई लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज दैट इज एज ओल्ड एज असेंबली लैंग्वेज, और लैंग्वेजेस आर मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेस टू। उसमें ये तीन चीजें होते ही होते हैं और इसी से लैंग्वेज बनती है। सबसे पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है इटरेशन। सीक्वेंस का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शंस आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देना है। सिलेक्शन का मतलब क्या है? कंडीशंस आपके, इफ कंडीशन, इफ ये होगा तो वो करो, इफ दिस हैपेंस डू समथिंग एल्स, if this doesn't happen then try to do something else, and so on. This if conditions will always be present, which is called as selection. Select what you want to execute, select what you don't want to execute, so that is called as selection part. Finally, iteration. Iteration matlab doing something repetitively in a loop. Okay, that is called as recursion. Alright. You don't have to remember all of this. This is just a background of a program or background of a programming language for students who don't have any background in programming language. And this could also be some revision for people who already have some background in programming languages. All right. So I'll pause here. You can take notes, and then we can proceed. Or you can ask questions if anyone have any questions. आप सब लोग notes निकाल रहे हो ना? With your own hands, with your textbook. Sorry, with your notebook. Yes, sir. Okay, great.
सर मुझे ना यहाँ पे कैगल इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, क्या क्या सिस्टम का प्रॉब्लम है या कैगल ओपन नहीं हो रहा अकाउंट, या फिर कैगल का वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है? वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा है। ओके ओके, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ऑफिस का हाँ यूज कर रहे हो, खुद का हाँ, यूज कर रहे हो? नहीं लैपटॉप, फोन लैपटॉप यूज कर रहा खुद का ओन लैपटॉप? हूँ। हाँ वेबसाइट का नाम सही है, kaggle.com, KAGGLE.com? यस। ओके, हम लोग थोड़ी देर में करते हैं डिबग उसको, ठीक है, डोंट वरी, विल डिबग इट, विल फिक्स इट फॉर यू। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको थोड़ी देर में, ठीक नहीं चलेगा, है, हाँ। ऑलराइट। एट द एंड ऑफ द सेशन विल डू इट, जब आई डोंट वांट एवरीवन टू वेट फॉर इट, ठीक है? या श्योर श्योर। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। So we'll move on to understand what are some of the pros and cons of Python. Okay. So just like Python, there are many programming languages. They'll have their own pros, they'll have their own cons. Python also have some downsides. Python also have some upsides. Some of the upsides which are common to Python is beginner friendly. There's a large community who are actively working on improving Python programming languages. It is highly scalable. Matlab, you can write big softwares using Python. It is portable. Matlab, if you want to change the system on which it is running right now, you can easily change it. अगर आप एक लिनक्स पे रन कर रहे हो या फिर विंडोज पे रन कर रहे हो और आपको मैक पे पोर्ट करना है, यू कैन इजीली पोर्ट इट. इफ यू वांट टू पोर्ट इट टू अ क्लाउड, you can easily port it. Okay, it is flexible and extensible. Okay, flexible matlab it can work with other programming languages too. It is flexible in that manner. It has extensive library. Okay, when I say extensive, there is nothing that is not yet implemented in Python. You can search for anything and you'll find some implementation for that in Python. Okay, it's extensive in that manner. कोई भी as simple as एक अगर आपको calculator भी implement करना है, तो that calculator is also implemented hundreds of times by different hundreds of people. Okay, अलग अलग implementations present है उसके. You can pick and choose from that. Python also has Internet of Things opportunities. If anyone of you is from IoT background or have worked on any of the IoT devices, आपको Raspberry Pi और ये सब devices के बारे में अगर पता होगा, तो Python भी यूज कर सकते हो आप वहाँ पे, ठीक है? Some of the cons, Python में जब आपको मल्टी थ्रेडिंग करनी होती है, यू डोंट हैव टू नो दिस एग्जैक्टली व्हाट इट मींस राइट नाउ, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग मतलब एक पर्टिकुलर टास्क करना है और वो टास्क बहुत बड़ा है. कैन यू ट्राई टू पैरेललाइज इट बाय यूजिंग मल्टीपल थ्रेड्स? there's more to that. I just gave you a very rough answer. In terms of speed of compiling, if speed of execution, Python is slower than some of the assembly languages या फिर some of the lower level languages. Python थोड़ी ज्यादा मेमोरी लेता है as compared to C. एंड पाइथन में जब कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, गार्बेज कलेक्शन नाम का एक मॉड्यूल होता है जो मेमोरी फ्री करते जाता है. जैसे कि आपके फोन में अगर कोई फोटो रिपीटेड है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डू यू वांट टू डिलीट दिस सम ऑफ द फोटोज व्हिच आर नॉट बीइंग यूज्ड एनीमोर, या फिर व्हिच आर रिपीटेड फोटोज, यू विल से यस और नो. पाइथन में उसी तरह से अगर कोई प्रोग्राम रहेगा, कोई सॉफ्टवेयर रहेगा जो रन हो रहा है इन द बैकग्राउंड, या फिर सॉरी, if there are some variables created in the background, if there are some variables which are created which are not being used right now, there will be a module called as garbage collection which will go and clear that memory so that that memory can be used by new variables. Sometimes there might be a memory issue in that. आपको जब आप करोगे तो आपको ये सब कुछ
नहीं दिखेगा कहीं भी, because it has matured so much that all these issues, most of these issues are fixed. You'll only find these issues as issues जब आप advanced programming करने लगते हो. Okay, so don't worry about कि सर इतने सारे concepts, should I be really learning Python or not? Every language will have its own cons. Okay, so these are some top companies who are using Python. You will see this is just a handful of companies. There are thousands, in fact, millions of companies who are using Python. There are some main names here: Google, Netflix, JP Morgan, NASA, YouTube, Bitbucket, Freelancer, SurveyMonkey, MIT, Hike, Spotify, Amazon, Reddit, Nokia, Quora. Millions of companies are using Python. Okay, so the skills that you gain of it, the skill of Python is not going to be useless. You can use it in many places. You'll do good. First program हमने थोड़ी देर पहले ही देखा. Actually we already created first program, which is hello world, and then we also created another one जिसके, I mean not the program, we also ran 2 lines of code. तो आपको ये करके देखना है जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तब. ठीक है? All right, so finally before we end, I want to let you all know कि Python या फिर कोई भी हार्ड स्किल जिसमें टाइम होता है देना, या फिर जिसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. ओके, सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करते रहो. और ये प्रैक्टिस में जब बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आज कर दी, कल नहीं की, परसों नहीं की, उसकी बात नहीं चलती. दिस प्रैक्टिस हैज टू बी ओवर द होल पीरियड ऑफ द कोर्स. आपको तभी उसका बेनिफिट दिखेगा. और डेली प्रैक्टिस करना मतलब यू नीड टू हैव ग्रिट. there's a really good video on grit here जो आप बाद में आपकी फ्री टाइम में देख लेना. It's just 6 minutes long. I'll just share it with you all. It's a good video. It talks about how grit wins most of the times. I mean, if not all times. अगर किसी के पास पैसे ज्यादा है, if he's having an advantage in that terms, but if he does not have a grit to keep going at something, then he's not going to achieve what he wants to. Okay? So grit is one of the most important deciding factor for success. And Python या फिर डेटा साइंस जब आप पढ़ोगे, यू नीड ग्रेट. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स गिव अप, एंड आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू गिव अप. Sir, आई is वांट it यू a टू video? अंडरस्टैंड. या इट्स नॉट अ वीडियो राइट नाउ. आई शेयर द लिंक विथ यू ऑल. ठीक है? Uh-huh. Sure. I'll share the link. You can see it in your free time. It's a 6 minutes long video. Maybe you can save it for later too. All right? Okay, sure. Yeah. So the video is about grit, and how grit is more important than your IQ, how it is more important than your circumstances, how it's more important than any of the other things that you think will affect your rate of success. Right? So that's the link. I'd like you all to go through this video. 6 minutes long video, but it has lots of good information in it. All right. So I think that's it for today. I'm going to stop this recording now. I'll share the recording after some time. जब recording process हो जाएगी